permutation. You know that we are discussing about permutation. In the last lecture, we have discussed some terms. The important terms that we have discussed is the factorial. And now in this lecture, I am repeating the factorial's value. If we want to find the factorial, if you want to find the factorial, that is 6 factorial, and you have to find the value of 6 factorial, this value of 6 factorial will become 6, 5, 4, 3, and 2, and 1. So this becomes 6 factorial, and related to the factorial exercise 7.2, already we have done in the previous lecture. Today, we will do some questions related to exercise 7.1. Before starting the 7.1, we will discuss some fundamental principle of counting. हमने एक बड़ा सा चार्ट बनाया था, उस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को भी समझने की कोशिश की थी. वीडियो ऑलरेडी अपलोड है पार्ट 2 करके, परमुटेशन के नाम से, परमुटेशन पार्ट 2 के नाम से. तो हमने अब कुछ एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5. आपको इन डिजिट्स का यूज करना है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. यू हैव टू यूज these digits and you have to form 3 digit number. 3 digit number मतलब जैसे कि आपका 100 से शुरू हो जाते हैं, 101, 102 एंड 999 अप टू 1. तो इस तरह से आपको कुछ नंबर्स बनाने हैं. यू हैव टू फॉर्म 3 digit number. फर्स्ट पार्ट में करना है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. मींस आपके ये वाले नंबर भी चलेंगे, जैसे कि आपने 111 बनाया, इसमें नंबर में रिपीटेशन ऑफ डिजिट, रिपीटेशन ऑफ ये था 333, ये नंबर आपके अलाउ रहेंगे. इन द फर्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट पार्ट रिपीटेशन इज अलाउड. अब आपको इस तरह के कितने नंबर बनेंगे, इस तरह से काउंट करना तो इजी नहीं है, इजी नहीं है कि 100 आप 3 डिजिट तो बहुत. तो वो कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड. इस तरह से 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते your unit place. This box is indicating your tens place, 100. सपोज कि आप 289 बनाया, तो इसमें क्या बोलते हैं स्टार्ट है. अगर मैं आपको ये 3 यूनिट प्ले कंप्लीट नंबर का, इन डिजिट्स को यूज करना है. आपको अपने तरीके ढूंढने हैं कि आप इस बॉक्सेस को कितने वे में फिल कर सकते हो. In the first part, repetition is allowed. It is given that repetition is allowed. Now, to fill this place, there are how many way to fill this box. आप इसमें 1 भी रख सकते हैं, आप इसमें 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी. ये 5 नंबर ही यूज करने हैं. उन पांचों नंबर को यूज करके आप इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं. मीन्स टू फिल दिस बॉक्स, टू फिल दिस प्लेस, दैट इज अ यूनिट प्लेस. To fill this place, there are only 5 ways. There are 5 ways. या 5 तरीके ऐसे हैं, 5 मेथड्स आपके पास ऐसे हैं जिससे आप इस यूनिट्स प्लेस को फिल कर सकते हैं. अब क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है, आपने कुछ भी रखा, इन 5 वे कौन कौन से हो गए, आप 1 रखो, यहाँ पे 2 रखो, 3 रखो, 4 रखिए या 5 रखिए. इनमें से कोई सा भी नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं. मतलब इस बॉक्स को फिल करने के आपके पास 5 वे हो गए. इन द सेम वे there are also 5 way to fill this box because repetition is allowed. मान लो आपने एक
कोई भी नंबर यहाँ पे लिख दिया, उस नंबर को दोबारा फिर से लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो देयर आर ऑल्सो ए 5 वे टू फिल दिस बॉक्स, एंड इन द सेम वे देयर आर 5 वे टू फिल दिस बॉक्स। क्योंकि 5 वे के आप 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर लिख सकते हो, तो यहाँ भी 5 तरीके हो गए आपको इस बॉक्स को भरने के। अब यहाँ पे हमारा जो हमने कल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने स्टार्ट किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है आपको? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आप इस तरह से आप वे निकाल लें कि इस डिजिट को भरने के 5 वे है, इस डिजिट को फिलअप करने के 5 वे है, एंड टू फिल अप दिस डिजिट देयर आर 5 वे, तो आप इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट योर टोटल नंबर ऑफ वेज। मींस आफ्टर मल्टीप्लाई यू विल गेट 120 वेज। मींस आपको टोटल ऐसे इस डिजिट्स को यूज करके हेलो यू विल फाइंड। यस। सर, बोर्ड क्लियर में लिखा हुआ क्लियर नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा। ये लो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, अब ठीक है? नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहा। नाउ पता नहीं इज इट रिफ्लेक्शन आ रहा क्लियर? है, क्या हो रहा है, क्लियरिटी नहीं है। I think there may be some network issue. हाँ, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हाँ, नेटवर्क की वो प्रॉब्लम है, लिखा हुआ तो आ रहा है नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, ओके फिर आई थिंक कंटिन्यू करो, और क्या है। ओके 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 मेरी तरफ से ओके है सर। यहाँ नेटवर्क ठीक है सर, आपके साइड सिस्टम में नेटवर्क। Okay, students, according to fundamental principle of counting, we can find out the number by multiplying these number. After multiplying, we will get 125. Means to fill these places, this unit place, tens place, hundred place, आप इन 5 डिजिट को यूज करके आप कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं? आप 125 नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऐसे काउंट करेंगे 101 102 103। यू नीड नॉट टू काउंट इन दिस वे। तो ये टोटल कितने नंबर बनेंगे इन डिजिट्स का यूज करके? 3 डिजिट नंबर इतने भी बनेंगे। अब आपको ये इन नंबर का यूज करके आपको इसमें जीरो तो नहीं है, तो अगर हम इसी पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें, 3 डिजिट नंबर अगर हम ले, तो जैसे 235 432, इस तरह के टोटल आपके 125 numbers will be formed when repetition is allowed. अब now in the second part of this question, second part is that repetition of digit is not allowed. अब repetition allowed नहीं है। इसी क्वेश्चन में देखिए क्या चेंज आएगा। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आपके पास ये बॉक्स, इस बॉक्स को फिल करने के कितने वे हैं? 5 वे, 5 तरीके हैं। आप किसी न किसी एक मेथड से तो आप इसको फिल कर दोगे। इन डिजिट्स में से कोई ना कोई एक डिजिट का यूज करके आप इसको फिल कर दोगे। इट मीन्स दैट टू फिल अप दिस डिजिट या दिस प्लेस ऑफ डिजिट देयर आर ओनली 4 वे। अब यहाँ पे 4 तरीके बचे आपके, बिकॉज रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। यानी कि आप, इट मीन्स दैट यू कैन नॉट फॉर्म एनी नंबर which is this type of number 2 3 2। here repetition of these two is not allowed. In your second part of first question, repetition of digit is not allowed, means to fill up this place, this is not allowed. To fill up this place there are 5 way, and to fill up this place there are only 4 way, there are 3 way. Now you have to multiply this, and after multiply you will get your total number of way in which you can find out your answer. So after multiplying you will get 60, means you can form 60 numbers with the help of these digits as written in our statement. With the help of these digits there are total 60 numbers can be formed. अब इसमें repetition allow नहीं। Now
आई एम चेंजिंग द स्टेटमेंट लिटिल बिट, दिस इज अलग रहेगा। अब इस आप इसको कंपेयर कीजिएगा अपने इस वाले क्वेश्चन के साथ। अगर now you have to use these digits 0 2 3 4 5, and now you have to form 3-digit number, and there is a 3 boxes, and you have to fill up these boxes. This box is unit place, this is tens place, and this is hundred place. Now you have to form 3-digit number. अब 3-digit number fill up करना है आपको। इसको fill up करने की अब उसमें condition आपको दे दे repetition, repetition is allowed, repetition is allowed, repetition आपका allow रहेगा। Okay, condition is clear. Now to fill up this box, there are how many way? There are 1 2 3 4 5, there are 5 way to fill up this box. Means इस box पे आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी, sorry 1 नहीं है यहाँ पे, 2 3 4 and 5. With the help of these 5 number you can fill up this box, you can fill up this unit place. And because it is given that repetition is allowed, so we can use 5. There are 5 way, and there are how many way to fill up this 100th place? क्या आप कभी इसको 0 से फिल अप कर पाओगे? अगर आपने यहाँ 0 फिल अप कर दी, क्या यूनिट डिजिट बनेगा? क्या 3-digit नंबर बनेगा? 0 2 3, ये 3-digit नंबर बना। दिस इज 2-digit नंबर, दिस इज 23। अगर आपने इस प्लेस पे 100 प्लेस पे 0 को रखा, तो क्या ये 3-digit नंबर बन पाएगा? नो, इट्स नॉट अ 3-digit नंबर। सो टू फिल अप दिस प्लेस, there are how many way? There are only 4 way. With the help you can either write 2 3 4 or 5, इनमें से कोई में से 4 तरीके आपके पास हैं जिसकी हेल्प से आप इस बॉक्स को फिल अप कर सकते हैं। अब now multiplying these you will get your answer, you will get 100 ways, means you can you will get 100 numbers, 100 total 100 numbers with the help of these digits. These are 3 digits number. Are you getting this point? Now with the help of this given statement, we will try to understand when repetition is not allowed. Now allow numbers की repetition आपको allow नहीं है, means आप कोई इस तरह का नंबर नहीं ले सकते 4 4 0, इस टाइप का नंबर आप नहीं ले सकते जहां 4 और 4 की repetition। and you have to fill up these boxes. There are how many way to fill this unit place, and there are how many way to fill up these tens place, there are how many way to fill this 100 place, and repetition is not allowed. So if you want to fill up this 100 place, अब 0 तो यहाँ रख नहीं सकते, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ इसमें, अब इसको रख के दिखाएंगे। Now can we put here 0? अब यहाँ 0 तो रखा नहीं जा सकता, वो 0 रख दिया तो वहाँ यहाँ पे ये 3-digit नंबर नहीं बनेगा। So we can only put here 2 3 4 and 5. There are 4 numbers that can be put in this place. So to fill up this box there are only 4 ways. Now according to a fundamental principle of counting, we have to multiply all these ways. So there are how many ways to fill up this box? As it is given that repetition is not allowed. आपने जो भी नंबर इनमें से फिल किया है वो नंबर यहाँ पे फिल नहीं करना, repetition is not allowed. So there are how many choices? Suppose कीजिए आपने इनमें से एक रख दिया, लेकिन 0 तो आप रख सकते हैं, आपने इनमें से ये 2 रखा suppose कीजिए, तो यहाँ पे 3 4 और 5 means there are also 4 ways to fill up this box. Since repetition is not allowed, so how many way you can fill up this unit place? Because 2 number has been already put it here, and there are only 3 number with the help of which you can fill up this unit place. So there are only 3 way to fill up this unit place.
multiplying, you will get your total number of 3-digit number. There are 40 with the help with so with the help of these digits, ये आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमने चेंज किया है, वो हम करवा चुके हैं। अभी आपको वहां पे एनसीईआरटी में 1 गिवन था, दैट हैड बीन कंप्लीट। अब इसके स्टेटमेंट को रिपीट करके मैं एडिशनल क्वेश्चन आपको ये रिपीट करवा, तो इस तरह से आपके ये 48 वे बनेंगे। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट second question we will discuss. So second question, how many 3-digit even number can be formed? Now you have to form in the second question 3-digit even number. Observe that you have to form 3-digit even number. अब 3-digit even number तो वैसे आपके 100 से शुरू हो जाते हैं। अब इसमें even कौन से आते हैं? इवन नंबर आर दोज नंबर भी जिसकी आपका ये वाला प्लेस यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल हो, दैट इज अ इवन नंबर। अब ये 105 ये सारे के सारे आते हैं, बट व्हाट इज इवन नंबर जिसका लास्ट डिजिट ये इवन नंबर है। 102 इज आल्सो इवन नंबर। मींस इवन नंबर कौन से होते हैं जिसकी लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो। सो you have to form 3-digit even number with the help of digit 1, 2, 3, 4, 5. Is there any six is also there? You have to use these 6 digits and you have to form 3-digit number, 3-digit even number, and condition that digits can be repeated. Digits can be repeated means repetition of digits is allowed. Repetition is allowed. Here repetition of digit is allowed. Now this is the simple question. You have to fill up these 3 boxes, and to fill up these 3 boxes you have to use these number 1, 2, 3, 4, 5, 6, but that number you want to form should be even number, and repetition of these digit is allowed. You can repeat these digits, means to form even number you can, this number is also included. आपका ये नंबर भी इंक्लूड रहेगा जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ है। अगर आपका कोई 2 डिजिट्स को रिपीट करते हो आप तो ये नंबर भी आपका अलाउ रहेगा। इवन होना चाहिए, कंडीशन इज दैट इवन, वेदर द डिजिट आर रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग, बट फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर शुड बी एन इवन नंबर। अब इवन नंबर कंडीशंस, इवन नंबर आने की क्या कंडीशन है, हमारे यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट्स फिल होनी चाहिए सो दैट वी विल गेट ए इवन नंबर 2, 4 and 6. These are the 3 digits that should be filled up in the unit place so that we can get even number. So to fill up this place there are 3 ways. There are 3 way to fill up. हमारे पास 3 मेथड ऐसे हैं, 3 तरीके ऐसे हैं, 3 नंबर ऐसे हैं जिसकी हेल्प से हम इस डिजिट को फिल कर सकते हैं। नाउ कम टू दिस पॉइंट। नाउ डिजिट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। यहाँ तो कोई इवन वाली कंडीशन नहीं लग सकती आपकी, इनमें से 6 के 6 नंबर में से कोई भी नंबर पुट कीजिए आप, देयर इज नो कंडीशन एंड रिपीटेशन इज अलाउड। सो टू फिल अप दिस प्लेस देयर आर 6 वे एंड टू फिल अप दिस 100 प्लेस देयर आर आल्सो 6 ways. So after multiplying these you will get your answer. 663 you will get 108. There are total required numbers will be 108. मीन्स आपके पास इसको इस ऐसा 3 डिजिट नंबर बनाने के 108 वे हैं। 108 वे का मतलब आप 108 नंबर ऐसे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स एंड 100 टोटल
weight numbers will be even number. Even number definitely होंगे वो. Okay, students. So this is your second question. If I change the condition of the second question, in condition was that repetition of digit is allowed. If we change this condition, repetition is not allowed, then what will be your answer? So you have to try yourself. Uh, what will be the your answer? Now, in the third question, we will discuss third question. So all of these questions we are doing with the help of fundamental principle of counting. कल भी हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्या रोल प्ले करता है. आप टोटल वेज निकालिए, उन वेज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर टोटल वेज. सो इन अ थर्ड क्वेश्चन, how many four letter code can be formed using the first 100 letter of English alphabet? Sorry, 10 letter of English alphabet if no letter can be repeated. अब letters को repeat नहीं करना आपको. You have to form 4 letter code and you have to use 10 letter of first 10 letter of English alphabet. Means 10 first 10 letter का meaning क्या होगा? A B C D. आपको इस तरह से अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर यूज करने हैं एंड यू हैव टू फॉर्म फॉर. आपको इस तरह से कोड बनाना है. अब ये एक कोड बनाना है, 4 लेटर्स का कोड है. मींस देयर इज फर्स्ट, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. सो कंडीशन इज दैट यू हैव टू ऑब्जर्व द कंडीशन. इंग्लिश के फर्स्ट 10 लेटर्स आपको यूज कर A B C D E F G H I J up to J you have to use. Means आप इनमें से फर्स्ट 10 लेटर में से कोई भी लेटर इसमें फिल कर सकते हैं. There are 10 way to fill up this box. आपको इस तरह से कोड बनाना है कोई भी. कंडीशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड और नॉट. If no letter can be repeated, condition is that no letter should be repeat. Means आपको जैसे आपने बनाया A B C D, this is your letter, required letter A B C D. Next is E F G E F D A. This is your required letter, required code that are formed with the first 10 letter of English alphabet. तो इस तरह से आपको कितने लेटर you have to observe this. So there are total 4. There are only 9 ways to fill up this, and there are 8 box, and 4 can this box can be filled with 7 ways because this is not allowed. जो लेटर आपने यहाँ तक दिया, अब आपके पास कितने लेटर बचे? 9 ही लेटर बचे हैं. 9 लेटर में से कोई भी एक लेटर आप यहाँ रख सकते हो. अब 2 लेटर already fill up. Now remaining in the remaining 8 letter you can fill up this box, and with the help of remaining 7 letter you can fill up this 4th box. So according to fundamental principle of counting, if you want to find out the total numbers, you have to multiply this 9 10 9 8 and 7. After multiplying you will get your answer. You can multiply, you will get 5 0 4 0 पेज. मीन्स आप इसको 5040 कोड्स बना सकते हैं with a given condition. The condition was that you have to form 4 letter code and you have to use first 10 letter of English alphabet and repetition is not allowed. That was the condition, and with the help of that condition you can form
5040 number of codes. So this was your third question that we have done with the help of fundamental principle of counting. Now we will discuss next question, the fourth one. You have to read this question. How many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67? For question number 4, you have to form a 5-digit telephone number. Means there are 5 boxes and you have to fill up these boxes. There are 5 boxes, and with the help of these 5 boxes, you have to fill up these 5 boxes, and you have to use the digits 0 to 9, and number is started from 6 7. Means जो भी आपको बनाना है उसमें एक नंबर यहाँ 6 और एक नंबर 7. Means ये फिक्स है. इसको फिल करने का सिर्फ एक ही वे है. There is only one way to fill up this box, and there is only one way to fill up this box. Because in the given statement, it is in our statement it is given that there are the number that you have to form should be start from 6 7. Are you getting this point? So, and you have to use the digits 0 9, and no digit appear more than once. कोई भी digit एक से ज्यादा बार दिखनी नहीं चाहिए. It means that repetition is not allowed. Simply repetition is not allowed, and you have to use the digits from 0 to 9. Means there are 10 digits, and 2 digits have been already used one by one, and digits is not repeated. These are the 10 digits: 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So total counting is 10, and you have not used you cannot repeat the digits. 6 and 7 has been already written here. So how many way are remaining to fill up this box? Repetition is not allowed. How many way are there to fill up this box? So there are total 10 ways, and 2 has already been used. So there are 8 ways to fill up this box. 8 ways. And there are 7 ways to fill up this box, and there are 6 ways to fill up this box. So with the help of this condition, this will be 7 3 3 6. Means the required number of telephone number that can be formed with the given condition is fundamental 7 required. So in the same way we can do the fifth question. A coin is tossed 3 times and outcomes are recorded. So a coin is tossed 3 times and outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? You have to understand this, because this question will help in you to find out in probability. Probability में भी आपको काफी help करने वाला question है ये. You have to form a coin is tossed 3 times. So what will be the possible outcomes? We will analyze this question. Important question है. Probability में भी आपको ये help करेगा. वहाँ जब outcomes आपको निकालने होंगे. जब आपको coins को आपको once एक times toss किया जाता है, तो आपके पास क्या क्या possibilities हैं? What are possibilities? Whether you get head or you get tail. When you are tossing the coin twice. अगर आप 2 बार टॉस करते हैं तो आप क्या मिल सकता है आपको? या तो हेड टेल, दोनों बार हेड आ जाए. 2 बार टॉस किया आपने, whether you get head head, whether you get tail tail.
इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। या आपको क्या मिल सकता है अगर हम इसको, या तो दोनों बार फर्स्ट टाइम टॉस किया हेड, सेकंड टाइम टॉस किया फिर से हेड, या आप यहाँ कहें कि फर्स्ट टाइम टॉस किया यू विल गेटिंग हेड एंड सेकंड टाइम टेल। और क्या आउटकम आ सकती है, फर्स्ट टाइम टेल देन हेड एंड both time tail. So these are the possibilities that you can get in 10th standard. You know that इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए होंगे। If you are tossing the thrice a coin, what outcomes you will get? You will get whether this will be head head head, तो तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है कि आप दो बार हेड आए और फिर थर्ड टाइम्स टेल आ जाए, इट इज द पॉसिबिलिटी आल्सो। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हेड आए, टेल आए, एच आए, फिर से हेड आए, and there how many possibilities are there, head head tail या head tail tail, इस तरह की possibilities हैं। So these are the possibility you are getting when you are tossing 3 times of a coin. How many possibilities? There are 4 possibilities. There are another possibility that you will get head head, and what can tail head tail, tail tail head, tail tail head। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों बार टेल आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से आपने जब व्हेन यू टॉस वन टाइम व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन यू विल गेट हेड और टेल, व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन 2 times यू आर गेटिंग हेड टेल, हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। Means these are the possibilities, and with the help of fundamental principle of countings you can get you can solve this question. So this is the diagram approach, and you have to try yourself, and you have to find out with the help of fundamental principle of counting how many possible outcomes are there. Okay students, I think time is going on, and you have to complete your 7.1 exercise. Okay,